Hello everyone, welcome to the e-learning platform of M.D.Children Academy, Raising Nagar. Today we are going to perform an activity that shows the presence of starch in the leaf. For that, the material required are healthy potted plant, alcohol, iodine solution, dropper, forceps, tripod stand with wire gauge, Bunsen burner, 2 beakers with water, watch glass, test tube. Process: take a healthy potted plant and keep it in the sunlight for a few hours. After a few hours, pluck a green leaf from the plant. Now boil this leaf in water to kill it. After boiling in water, again boil it in alcohol. The purpose of boiling leaf in alcohol is that it dissolves greenish part, that is, chlorophyll. Then wash the leaf in cold water and place it in a watch glass. Now pour some drops of iodine solution over it. Observation: the leaf turns blue. Conclusion: this shows that starch is present in the leaf. the next important topic that we are going to start is cell. This topic is really important as it is the basic of biology. What is cell? Cell is the basic structural and functional unit of a living organism. Let's understand it deeply with the help of an example. Think of a wall, as a wall is made up of same kinds of bricks arranged well together. अब अगर किसी वॉल की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना हो कि वो कैसी है, अच्छी है या बुरी क्वालिटी की है, तो हम उसकी ब्रिक्स की क्वालिटी के बेसिस पर उस वॉल की क्वालिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब जैसे नंबर ऑफ़ ब्रिक्स को अरेंज करके हमने एक वॉल क्रिएट किया है, तो वहाँ पर सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक ब्रिक है. सिमिलरली इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी एक सिंगल यूनिट्स से मिलकर बनी होती है एंड दैट सिंगल यूनिट इज़ नोन एज सेल. एज इन वॉल, bricks are arranged well. Similarly, in living organisms, cells are arranged to prepare a body. Now, जितने तरीके के organisms हैं, living beings हैं, सबकी बॉडी में अलग अलग तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लाइक हमारी बॉडी में अलग तरीके के सेल्स हैं, प्लांट बॉडी में अलग तरीके के सेल्स होंगे. ऐसे ही अगर हमारी बॉडी का हम एग्जाम्पल लें तो हमारी बॉडी में मिलियंस सेल्स कंबाइन होकर कंप्लीट बॉडी बनी है. सिमिलरली प्लांट्स की बॉडी भी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जिनकी बॉडी एक सिंगल सेल से बनी होती है. इन ऑर्गेनिजम्स को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप फॉर दिस पर्पस. Before discussing further, let us understand the structure of a cell.
Here is a simple structure of a cell. The outermost layer of a cell is known as plasma membrane or cell membrane. Cytoplasm is the jelly-like structure filled inside the cell body. Nucleus is the central part of a cell. Generally, it is situated at the center of the cell. It behaves like brain of the cell. That means it controls all the activities of a cell. As I told you earlier that number of cells combine to form a body, a living body. Okay, but now we are going to discuss a single celled organism. The single celled organism is named as alga. Alga is a single celled organism that live in stagnant water. These are green in color due to the presence of chlorophyll. As you know, what is the purpose of chlorophyll? Chlorophyll helps to synthesize food. That means, like plants, algae can also synthesize their own food.